हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब लोग? आज आई एम रियली शॉक्ड एज अ टीचर। आई एम सॉम्बर, आई एम सैड। आई हैव कम अक्रॉस अ न्यूज़, और प्रॉब्ली आप सब ने भी देखा होगा। पिछले 2 दिन से इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट वायरल हो रही है, एंड दैट इज़ रिलेटिंग टू द बॉयज़ लॉकर रूम। एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाया गया कुछ लड़कों के द्वारा, जिस पर ऐसी ऐसी बातें जो कि शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता, वो सब डिस्कस की गई बाय दोज बॉयज़ अबाउट गर्ल्स हु वर अंडर एज्ड। और ये लड़कों का जो ग्रुप था, ये जो लड़के हैं महज 16, 17, 18 साल के लड़के हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, ऐसा अभी तक पता लग पाया है। नाउ दीज बॉयज़, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट ऑल दे हैव वेंट थ्रू in their past lives, and there were some girls as well who were there defending these boys. आई एम वेरी शॉक्ड एज अ टीचर कि हमारी सोसाइटी जो है, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, जिन्हें हम अपने राष्ट्र का भविष्य कहते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, आई डू नॉट नो। एंड फॉर दिस आई होल्ड रिस्पॉन्सिबल ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हु इज़ देयर इन द सोसाइटी। टुडे इफ़ यू सिट डाउन टू वॉच टेलीविजन, हमें शर्म आ जाती है टीवी देखते हुए भी। ऐसी ऐसी चीज़ें टीवी पर ओपनली दिखाई जाती हैं, एंड दैट इज़ वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। पेरेंट्स आर ओनली कंपेंसेटिंग देयर लैक ऑफ टाइम विद मनी। बच्चों को पता है हमें कुछ चाहिए, 2 दिन बस रोना गाना मचाना है कि हम कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे भी नहीं, और हमें मिल जाएगा। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन इज वॉट दे आर गेटिंग। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग यू कैन थिंक ऑफ। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। उनको बस चुटकी बजाया, पलक झपका, और उनके पास वो सामान हाजिर, वो चीज़ उनके लिए हो गई। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग टू हैपन इन डेज टू कम। हमारे भारत के कल्चर को, हमारे कल्चर को इतना ब्यूटीफुल कल्चर माना जाता है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, और आज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग, आई डू नॉट नो कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर वो कौन सा रंग ले रहा है। उसे लोग अब रेप कल्चर बोल रहे हैं। बताओ, शर्म आनी चाहिए, शर्म। नाउ एवरीबडी ऑफ अस इज रिस्पॉन्सिबल। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, आई हैव सीन they have made pages and they have posted stuff about their teachers that you cannot even think of what they have written for them. इतनी गंदी बातें, इतनी भद्दी बातें। I do not know where these students they are getting all this stuff, and I believe that is probably the Bollywood, the media, the uncontrolled use of internet that is leading to all this instant gratification of everything. Whatever you wish to see, just on a click it is available for you. And those kids, उनको समझ नहीं है कि what is good for them, what is bad for them, and they are doing all this stuff. They were planning to rape a girl. I don't know how, I mean, where these thoughts they come up from, I do not know. And I'm shocked as a teacher, as an educator. I feel so somber, so sad, so depressed at this point of time. I cannot even tell you. और मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि जो बच्चे आज ऐसा कर रहे हैं, आने वाले टाइम में they will also grow as parents, and when their kids will do that, I don't think that any one of us has the ability to accept all that when you become parents. Things have to change. At every end, things have to change. Objectification of women's, it is a very great matter of concern. And it is not only regarding different
things, everything you will find objectification of women's. Not even a single ad on television you will find where women are not objectified. So there is problem at both ends, men and women. Nobody is less, and all of us will have to pay the price for it, because our future generations, our culture is going to get ruined because of all this what is happening. And I'm really shocked. I do not know what else to say. I just wish that people realize, I mean, students realize, their parents realize, they start giving their children more time, sitting with them, discussing their problems, understanding what is going happening in their lives, what is going happening in their schools, with their studies. They are compensating it with only money, and that will not do, sir and ma'am. That will not do. Parents have to understand that their children, they need love, and that will flow from your side, not from anybody else's side. They have to understand, you have to be friends with your children. This has to be there. I still remember my old days when I was a kid. We used to sit every day with our mom and dad, have dinner, have lunch, and discuss all days activities that we used to do in school every day. Today, everything is missing. Only they are celebrating days, Mother's Days, Father's Days, I don't know what else. And I'm really shocked at what all has happened. I hope that God gives some kind of good wisdom to all these people, to all these students who are out there, and give their parents some time. They have earned a lot of money, now give them some time, oh God, so that they can sit with their children and they can prevent our coming generations from getting spoiled in such a bad way that is happening, that our culture is being marked as a rape culture.